Hey guys, how are you doing? Amit Dubey back again to help you. And vocabulary of the day is laden. 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 It's an adjective. Alright? So what's the meaning of laden? You must be wondering. So laden means burdened, loaded, stuffed. Okay? Laden means burdened, loaded, stuffed. I'll make sentences and you'll understand it even better and you'll understand how to use it. So मान लीजिए आपके घर के पीछे एक आम का पेड़ है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऐसे आम लगे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है वो आम से, है ना. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे और लेडन कैसे यूज करेंगे? यू विल से दैट द ट्री इज लेडन विद फ्रूट्स और द ट्री इज लेडन विद मैंगोस. ठीक है, आपको और एग्जांपल्स देता हूं, आप समझेंगे. मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो कर्जे से दबा हुआ है, कर्जे से भरा हुआ है. सो यू विल से दैट माय फ्रेंड अनीश इज लेडन विद डेट. शॉपिंग आपको पसंद है? शॉपिंग एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए ना आपने शॉपिंग करी और ऐसे हाथों में भरे हुए हैं बैग, बहुत सारे. तो आप क्या कहेंगे? दैट माय हैंड्स आर लेडन विद शॉपिंग बैग्स, मतलब उनसे भरे हुए. I hope you are using these words that I'm teaching you, because if you can use these words that I'm teaching you, you will definitely stand out and you will be able to express yourselves well, and you will also be able to teach people these words, and even they can be better, when it comes to their range of vocabulary. So if you're learning, hit the like button. If you want to learn more, subscribe, follow us on social media, and if you want to make a sentence using this word, you can write your sentence in the comment section so that we could give you feedback. And that would be all for today. Take care of yourself, and thank you so much for watching my videos and writing such beautiful things to me. Thank you so much is all I have to say. Bye bye.